Hi everyone, Lisha Roy here. So you must be wondering that why I have been starting the pharmacological topic. As you can check in the, I am going through pedo series, but in between I am taking pharmacological terms only, the basics pharmacology, because after pedo I am going to start your pharmacological topics. Okay, so pharmacology is a very vast topic. It will be boring if I don't take with pedo. Okay, that's why I'm taking it. My first topic is drug dependence. First, I will tell you who is the definition in the book. Then I will explain you everything. Okay. In this lecture, we have to cover this 10 topic. And in this 10 topic, I will make you remember like this. First, I will tell you the definition. Then I will explain that. Right. First is your drug dependency. What is drug dependency? Dependency is also known as your physical dependency. It is when we take a drug in a repeated manner. At that time, our body get dependent because of its neuroadaptation. Okay, that is your drug dependency. जब हम किसी medicine को repeated manner में लेते हैं, then the body thinks कि if we don't take this medicine, then we could get harm और इसके बिना मेरा चलेगा नहीं. That is your drug dependency. For example, your morphine. Okay. In previous days or nowadays also in cancer, in such patients we give morphine, but in previous days we use it as a painkiller. Okay, so what happen is when the disease get cured then also the patient get dependent to morphine. Okay, they take starting it as in a different manner. So that is drug dependency is called me. Okay, there are many examples were there. Okay, so and one thing more, if we discontinue this drug, it may cause your withdrawal syndrome. I repeat, if we discontinue, अगर हम इसको रोक देते हैं मेडिसिन को लेना, तो बॉडी withdrawal syndrome शो करता है. Okay, so this is what is your drug dependency. Second is your half-life. What is the half-life is all about. Okay, so the half-life is, for example, there are many half-lives. For example, first, second, third, fourth. Okay, T half first is your 50%. T half second is your 50 plus 25%. T half third is your 50 plus 25 plus your 12.5. And fourth is your 50 plus 25 plus 12.5 plus 6.5. This is the manner of the T half. Okay, so I must tell you that what is the T half is all about. T half is your drug elimination. Okay, I will tell you. See, the third topic is your drug elimination only, but I just give you a example. For example, there are two types of elimination. Okay, I must explain this topic first, but it's okay, I will explain you both together. So in drug elimination, what happens when we take a drug or when we when it comes to our stomach, and there are two type of elimination. First, metabolism and your zero order, means first order kinetics and your zero order kinetics. Okay, first order this is comes into your drug elimination, your first order kinetics, your zero order kinetics. What happens in your first order kinetics? In first order kinetics, the T half, okay, the time, the life of the drug. Here in first order kinetics, the T half remains constant, but in your zero order kinetics, the T half increases as the drug concentration increases. Okay, for example, all the the NOL drugs like propanol, adeninol, this all drugs come in your first order kinetics. Okay, in first order kinetics, for example, I have given you 50% concentration.
but the elimination rate is your half life, that it will eliminate 50% like this, but like in two way it is gonna eliminate. Okay, so it will remain constant if I give the your 60% concentration. I will explain you. अगर मैंने आपको प्रोपेनॉल दे दिया, प्रोपेनॉल, एडिनिनॉल, ये सारा चीज आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आपको कोई भी मेडिसिन दिया, ठीक है, उस मेडिसिन में कितना भी कंसंट्रेशन में आपको दे दूं, उसमें क्या होता है कि आपका धीरे धीरे जितना कंसंट्रेशन में मैंने यहाँ पे दिया उसका जो भी एलिमिनेशन होगा वो आपका कांस्टेंट होगा. बट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, अगर मैंने आपको 50% कंसंट्रेशन में दिया तो आपका 50% एलिमिनेशन होगा. अगर मैंने आपको 60% कंसंट्रेशन में दिया तो आपका 60% एलिमिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा आपका, द एलिमिनेशन रिमेन सेम. बट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, the elimination increases as the concentration increases. Okay, so this is the reason. Now comes to your T half life. T half life में क्या होता है, if T half 1 is 50%, 2 is 50 plus 25%, 3 is 50 plus 25 plus 12%. So different drug is having different percentage of your elimination. This is what, this is your elimination only. Just different drug is having your different types of elimination. Okay, so I am clear to you with the T half life, I am clear to you with your drug elimination. Now come your drug efficacy or efficiency. Okay, so what is your drug efficiency is all about. Drug efficiency में क्या होता है, I just explain you the thing is, एक ड्रग देने के बाद उसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या होता है, दैट इज योर ड्रग एफिकेंसी. एक ड्रग देने के बाद उसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या होता है, दैट इज योर ड्रग एफिकेसी. आई एम यूजिंग अ वेरी रॉ लैंग्वेज बिकॉज these are the terms which is very important to understand. Okay, drug efficacy refers to the maximal response that can be elicited by the drug. For example, morphine produces a degree of analgesia which the aspirin cannot produce. For example, एक पेशेंट को मॉर्फिन कैंसर पेन को एलिमिनेट कर सकता है, पर उसी पेशेंट को अगर मैंने एस्पिरिन दे दिया तो उसको उतना भी एफिशिएंसी नहीं होगा, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पेन नहीं ठीक होगा. Okay, so morphine is having more drug efficiency than your aldrin. Okay, so this is what about your drug efficiency. Okay, now comes your drug potency. What is your drug potency is all about? Drug potency is the amount of the drug need to produce the response. See, efficiency और potency में क्या फर्क है. एफिशिएंसी है कि जैसे आप दौड़ रहे हो 5 किलोमीटर आपका मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद आप दौड़ नहीं सकते, ठीक है, तो दिस इज योर एफिशिएंसी. पर पोटेंसी क्या है, पोटेंसी है कि मैं दौड़ रहा हूँ 5 किलोमीटर मेरा पोटेंसी है, मतलब कि उतना तक मैं दौड़ सकता हूँ और मिनिमम तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ ही सकता हूँ, ठीक है. सो दैट इज योर पोटेंसी कि 2 किलोमीटर आपका पोटेंसी है कि उतना तो आप दौड़ ही सकते. इट इज योर मिनिमम परसेंटेज, इट इज योर मिनिमम इफेक्ट. पर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है कि आप मैक्सिमम कितना दौड़ सकते हैं. दैट हैपेंस इन द ड्रग ऑल्सो. ओके, ड्रग में क्या होता है एफिशिएंसी में कि मॉर्फिन का एफिशिएंसी एल्ड्रिन से ज़्यादा है, पर पोटेंसी में क्या होता है कि मॉर्फिन और एल्ड्रिन दोनों का पोटेंसी है पेन को ठीक करना. दैट इज द मिनिमम इफेक्ट जो वो बॉडी को दे सकता है. नाउ एलर्जी, एवरी पर्सन को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर ड्रग एलर्जी. ओके, ड्रग एलर्जी में क्या होता है, आई जस्ट टेल यू, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन टू प्रोड्यूस द सिम्टम विच आर unrelated to the pharmacodynamic proline and largely dose dependent.
ओके, सो दिस इज एलर्जी। हम लोग का ये इम्यूनोलॉजिकल रीजन है। ओके, हम लोग का इसमें इसिनोफिल्स आपका इसमें रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को आपका पेनिसिलिन से एलर्जी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है टू द फार्माकोलॉजिकल ड्रग। ओके, दैट इज एलर्जी। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका प्रोड्रग दे देते हैं। ओके, हम लोग इसका प्रोडक्ट दे देते हैं। सो व्हाट इज योर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगी। प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, ये हम लोग को प्रोडक्ट आर द इनएक्टिव एज सच एंड नीड द कन्वर्जन्स इन द बॉडी टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग इसमें लेवाडोपा, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोडक्ट के। सो द लेवाडोपा इज द प्रोडक्ट ऑफ डोपामाइन। मान लीजिए आप डोपामाइन किसी एक रीजन से नहीं दे पा रहे हैं, ओके, या फिर आपको ये मतलब कि आपने डोपामाइन दे दिया बट वो उतना रिएक्टिव नहीं है, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्शन इट विल हेल्प द एफिशिएंसी और इट विल वर्क इन प्लेस ऑफ दिस। ओके, सो एंड देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आपका ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होता है, इसमें कम आपका साइड इफेक्ट्स होते हैं, एज वेल एज ये आपका लेस टॉक्सिक होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, एनारेबिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनालोप्रिकेट। एनारेबिल okay, then third example is the S-methyl dopa to your alpha methyl non-epinephrine. Okay, I have no place to write, so you can check in my notes, you can DM me about the product. I will give you the whole example, I have the whole notes about it. So the volume of distribution, now come to your volume of distribution. See, volume of distribution मतलब कि आपने किसी भी ड्रग को आपने इंजेस्ट किया, उसके बाद क्या होता है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका भी तो एक फॉर्मूला होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड। आपके पास दो ही तो कंडीशंस हैं, एक बॉडी में एक ब्लड में। अगर ब्लड में 50 होगा, बॉडी में 40 होगा तो इक्वलाइज हो जाएगा, वैसे ही वाइसे वर्सा। तो दिस इज द वे टू द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। ओके, सो इफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, किस पे क्वेश्चन आया था, जस्ट रिपीट यू। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर means more amount of drug in the tissue and less amount in the plasma and necrosis। अगर हम लोगों का अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसी ड्रग का, इसका मतलब आपका ब्लड में या बॉडी में ज़्यादा है rather than आपका प्लाज्मा या सेल्स में। ओके, इट इज फॉर श्योर, जस्ट अ कॉमन सेंस वाला थिंग। देन योर लोडिंग डोज, व्हाट इज योर लोडिंग डोज, व्हाट इज योर इंडिविजुअल डोज। सी, लोडिंग डोज इज इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन, मतलब कि मेरे को सुबह उठने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। सो यू कैन रिलेट दिस, एक मेडिसिन को काम करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर लोडिंग डोज। इट इज नॉट अ मैजिक कि खा लिया और ठीक हो गया, ओके। सो इट नीड्स अ टाइम, दैट इज योर लोडिंग डोज। सो आई जस्ट रिपीट द डेफिनेशन, if the time required to attain a steady state concentration of a drug is long relative to the temporal demand with the condition a loading dose is required। okay, for example, आपका loading dose का क्या मतलब हुआ, मान लो I am having a pain, very much pain, okay, I am taking one medicine, for example you just take the example of the morphine only, okay, पर मॉर्फिन को काम करने में आपका 10 मिनट्स का टाइम लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन के साथ ना एक लोडिंग डोज दे देते हैं, ओके, दैट इज योर लोडिंग डोज। तो उसमें क्या वो जो टाइम लैप्स है वो थोड़ा फास्ट आपका एक्ट करेगा, सो दैट मेडिसिन विल बी योर लोडिंग डोज, दैट टाइम इज योर लोडिंग डोज। ओके,
सो इससे क्या होता है, इससे आपका मेंटेनेंस बजाय रहता है. ओके, इससे आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी सैचुरेशन ऑफ द टिश्यू स्पेसेस का जो स्ट्रेस है उसको मेंटेन करने में ये लोडिंग डोज आपका हेल्प करता है. एंड इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन, I said totally depend upon. Okay, so totally depend upon your volume distribution. Now come to your individual dose. Individual dose is nothing. For example, it having the formula that is BW kg upon 70 into adult age. This is the formula. Okay, the your sorry, this is not age, this is dose. Okay, so whatever the weight of the individual upon 70 into the adult dose, that is your individual dose. Okay, and it also having a formula of like BSA m square, BSA m square upon 1.7 into average adult dose. Okay, this is also a formula of individual dose. There are many formula even. These two are the easiest formula, so I have written this. So I have covered this topic. Okay, the 10 topics I have covered. If you want to know me or repeat the topics individually, you can message me. I will repeat this. Okay, thank you so much. So in the next chapter, I will be coming with your pedo or some pharmacological terms. Okay, thank you and have a nice day.